9 sales psychology hacks that can convert your sales to 10x levels. 9 में से अगर आपने एक भी अप्लाई किया और एक हफ्ते के लिए अप्लाई किया, you will definitely get the results. At the end of the video, I'll share with you a cheat sheet which you can download and apply it in your life. Now, the best part is कि अगर आप सेल्स में नहीं हो तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो आपके लाइफ में. आप wherever you are in your, मे बी आप बैकएंड में काम कर रहे हो, यू से कि मैं सेल्स में नहीं हूँ तो ये वीडियो मेरे लिए काम का नहीं है. नो, I think every person on planet Earth is a salesman all the time, every time. For example, बच्चा रो रहा है, इसको भूख लगी है, वो रो रहा है, वो सेल्स मार्केटिंग कर रहा है. Let's say if you want to get some work done from someone else, फिर भी आपको वो सेल्स टेक्निक सीखनी पड़ेगी to influence someone to get the work done. So have an open mind और देखिए कैसे 9 सेल्स हैक्स आपको हेल्प कर सकते हैं. And at the end, I'll give you that particular cheat sheet. आप डाउनलोड कर सकते हो and apply it in your life. कभी आपने ऐसा बोला है कि यार मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है इन द वर्ल्ड, माई सर्विस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट स्टिल पीपल आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम मी. ऐसा क्यों होता है? इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स नॉट अबाउट योर सर्विसेज, इट्स समथिंग एल्स. कुछ मिसिंग है जो आपकी सेल्स प्रोसेस में कुछ गैप्स है, उस वजह से शायद से पीपल आर नॉट कनेक्टिंग विथ यू एंड दैट्स व्हाई योर सेल्स आर नॉट हैपनिंग. सो ये हैक्स आपको ये गैप प्लग करने के लिए हेल्प करेंगे. सो इमीडिएटली लेट्स स्टार्ट टू बिगिन विद द फर्स्ट हैक. हैक नंबर 1. Sales is something which you do for someone, not to someone. For example, मैं अपने experience से बात करता हूँ. So we have got thousands of members in Think and Grow Rich Mastermind. I mean, I'm really grateful for that because they have trusted me. And जब भी मैं कुछ product और service कुछ offer करता हूँ, कुछ course offer करता हूँ, I don't say I need to sell to you. No, I know कि मैं क्या difference दूंगा उनके जीवन में if they buy my product or service, if they buy my curriculum, if they buy my course. So how can I help them? So when you shift that perception that you're not selling to someone, you're selling for someone, that completely shifts it and आपकी belief system change होगी and you'll be able to sell more. So shift that perspective and then we go to hack number 2. Hack number 2 is you expect the sale always. हमेशा जब भी आप कुछ sell कर रहे हो, you have to expect कि ये sale होने ही वाला है. See, most of the time when a person is trying to sell, उनका कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है. मे बी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा एंड दैट एक्चुअली द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को तुरंत वो जजमेंट आ जाता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. बट लेट्स से व्हेन आई सेल विद कंप्लीट 100% सर्टेनिटी बिकॉज मेरी बिलीफ इतनी स्ट्रांग है विद थिंक एंड ग्रो रिच प्रिंसिपल्स कि अगर आपने ये प्रिंसिपल्स अपनाए तो डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आएगा. सो व्हेन यू सेल यू हैव टू बी फर्स्ट बी सोल्ड टू योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस के जो आप माल बेच रहे हो. Will you buy your product or service? If not, you will never have the conviction और वो conviction दिखेगा. No matter how many flowery languages which you use, आप इतने अच्छे sales में भी script आप use करेंगे, लेकिन अगर आपका conviction strong नहीं है कि you don't believe कि यार ये काम करेगा, it is never going to be sold for sure. So you expect the sale always expect the sales कि sales होने ही वाला है. And with that expectation, जब ये आप thought vibrations आप भेजते हो आपके prospective client में, उसी से उनकी sales closure होती है. Otherwise, you'll keep on trying, you'll keep on pitching, but sales will never going to happen. Hack number 3, be a little bit hard of hearing. जब भी a client says, no, I don't have time, I don't have money, I will let you know, I will think it over. Do not listen to that. If you want to be in the sales profession, आपको जो सुनना है वो ही सुनना पड़ेगा. Because most of the time you must have also observed that the sales happens after the first rejection, second rejection, third rejection. कुछ objection आएगा, उसके बाद में sales होता है. And when you listen to the no, sometimes you lose your confidence कि यार अभी तो ये सेल्स नहीं होने वाला है, उसने मना कर दिया, he is not the decision maker. वो पूछ के बोलेगा कि टाइम नहीं है मेरे पास, अभी ये पैसा नहीं है, मे बी मंथ एंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यू जस्ट keep on trying to push. Do not try to be too salesy, but try to see how exactly you can handle that objection. One more important thing, objection आएगा, उसी से रास्ता निकलेगा. See, do not consider objection as a roadblock. No, objection is an opportunity for you to actually close the sale. So do not get afraid of objection. अगर objection आएगा ही नहीं, कुछ reason बोलेंगे ही नहीं, मना करेंगे नहीं, तो आप क्या conversation करेंगे? So whenever there is a no as a reason, find out उसको कैसे आप tackle कर सकते हो. And that's, I think, the biggest hack which most salesmen miss out. Use this particular hack, use no as an opportunity, use an objection as an opportunity, and that's where you can really start to close your sales. Hack number 4 क्या है? Ask, don't tell. You see, asking builds the trust.
whereas telling builds resistance. Socratic method use करिए because when you are asking, that's where you can get an opportunity to understand कि आपके potential client की need क्या है, उनकी actual wants क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या pain points है, and from there you'll be able to find that particular way how you can connect your product or service to satisfy that need or the maybe the want of your potential client. When you're just telling कि यार मेरा तो बेस्ट प्रोडक्ट है, वी हैव गॉट दिस फीचर्स, ये हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है, दिस इज AI सपोर्टिव, मे बी यू हैव गॉट दिस मनी बैक गारंटी, दिस इज चीपर देन ऑनलाइन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो दैट टेलिंग इज नॉट गोइंग टू गेट यू दैट सेल्स. बट व्हेन यू रियली आस्क सम पावरफुल क्वेश्चंस, सो द होमवर्क फॉर यू टुडे इन दिस पर्टिकुलर हैक इज यू फाइंड आउट कि कौन से 2-3 क्वेश्चंस आप पूछेंगे अपने पोटेंशियल क्लाइंट को जिससे आपको पता चले कि उनकी क्या नीड है, क्या एग्जैक्ट पेन पॉइंट है, और वहां से आपकी सेल्स बहुत जल्दी क्लोज होगी. दैट्स अ वेरी पावरफुल हैक. हैक नंबर 4. हैक नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. इट्स कॉल्ड एज फोकस ऑन द प्लस, नॉट द प्राइस. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से मोबाइल आप बेच रहे हो एंड अ क्लाइंट वॉक्स इन, ठीक है, एंड द क्लाइंट सेज के आई वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल. आप पूछेंगे कि क्या रेंज में आप देख रहे हो, एंड द क्लाइंट विल से अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ मेरा बजट है. नाउ 25,000 का बजट तो है, एंड नाउ यू आर सेइंग कि यार ये फ़ोन लीजिए, आपको उनको 35 का फ़ोन बेचना है. फॉर एग्जांपल दैट इज़ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड जो उनको बेस्ट मैच करेगा उनकी नीड से, एंड इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो टू अचीव दैट सेल्स टारगेट्स. नाउ यू विल से 35 का मुझे उनको बेचना है और उनका बजट 25 का है. सो योर पर्सपेक्टिव शुड बी कि मुझे सिर्फ 10,000 की सेल एक्स्ट्रा करनी है. 25 की सेल तो हो गई है ना, बिकॉज उनका बजट तो 25 का है ही. सो डू नॉट थिंक कि मुझे 35,000 का मोबाइल बेचना है. नो, थिंक अबाउट कि मुझे सिर्फ 10,000 का एक्स्ट्रा बजट का मोबाइल बेचना है, एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू पुट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. इट्स वेरी इजी. व्हेन यू हैव अ बिग टारगेट टू अचीव, द माइंड सेज कि नॉट पॉसिबल, कैसे होगा, यू गेट ओवरवेल्म्ड. इट्स अ वेरी पावरफुल हैक. और उससे इसको आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो. आप बोल सकते हो देखो आपकी 25 का तो बजट है ही, आप मोबाइल एटलीस्ट 2 साल तो यूज़ करने वाले हो, 10,000 आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो. अगर आप 2 साल का नंबर ऑफ डेज डिवाइड करो, 700 दिन से डिवाइड करो, और 10,000 का आप एक्स्ट्रा बजट ले रहे हो, आई मीन लेस देन 15 रुपीज़ अ डे यू आर यूजिंग दिस न्यू मोबाइल विद दिस एडिशनल फीचर्स. तो 15 रुपया, लाइक विच वी कॉल दिस एज रिड्यूसिंग टू द रिडिकुलस ऑप्शन, कि 15 रुपया दिन का आई एम गेटिंग दिस मच मोर बेटर फोन. That's a much easier way to sell rather than 35,000 का फोन, मेरा बजट 25,000 का है. That actually blocks the sale. Use this particular practice. Focus on the plus of the price, not on the total price, and that's where you will be able to crack the sales of high tickets. Hack number 6: don't sell, counsel. See, be an assistant buyer, not a pushy closer. See, your focus should not be on closing deals. Your focus should be on opening relationships. Think about it. Have empathy. Sometimes maybe budget is a problem. Maybe the persuasion has to be there in a different angle. कुछ emotions आते हैं जब ये sales की process होती है. Some people have got that fear कि शायद से मेरे लिए काम नहीं करेगा. तो धीरे धीरे अगर आप उनके साथ में empathy रखेंगे तो ही उनके fears को आप निकाल पाएंगे. जब भी आप बहुत pushy हो जाते हो, it actually stops your sales process. बी अ फ्रेंड, आई मीन रियली काउंसल कि क्या फियर्स है, पहले क्या पास्ट एक्सपीरियंस हो गया है, और उस पास्ट एक्सपीरियंस से आप नया बदलाव ला सकते हो उनके एक्सपीरियंस को, और उससे आपकी सेल्स बढ़ेगी. नॉट जस्ट बाय जस्ट पुशिंग एंड ट्राइंग टू क्लोज डील्स. फोकस ऑन ओपनिंग रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स वेयर यू विल बिकम अ मास्टर सेल्समैन. हैक नंबर 7: हैंडल नो हरी with calm power. This is very powerful. In fact, even I faced this hurdle when I was selling my programs and courses, and this happens many a times. So they like the product, they like the service, they are convinced कि ये मुझे फ़र्क पड़ेगा, and everything is all fine, कि budget भी है, time भी है, everything is all fine, but not right now. Maybe after 1 month I'm traveling, etc. How many of you have experienced this? It's very very common कि यार urgency नहीं create होती है. At that time you feel कि यार सब कुछ तो हो गया, and you get frustrated inside. Well, that's the time where you have to have your calmness, your patience, and that real sense of poise. You do not have to get like agitated कि यार सब कुछ अच्छा है तो बाय करना, बाय कर ले, क्यों बाय नहीं कर रहा. No. That's not going to get you the sale. In fact, one of the techniques which I use is that I completely understand your point, that you have liked it, but maybe you don't feel it right now, that this is the right thing for you, and maybe there is something for you which we are speaking right now for this. I say like this, that there are no accidents in this world.
You just have to take that one small step right now. Do not think of कि इसके बाद में क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. Just take that first step right now. And when you reduce that long journey to that one small single step, that actually helps them to complete the sale, to close the sale. So when the hurriness is not there, you don't lose your patience. You just say, just take this one small step and see how beautiful you can start to get the results. And in case even if the sale does not happen at that time, maybe you can offer some gift or maybe give them some bonuses, or so that they can stay connected with you and eventually they'll come and be a part of your sales process. I've done this to many of my mentees and they have got value from this. It's a very powerful hack. If they are not in a hurry, you don't rush in a hurry. You remain calm, poised, and that really starts to get your impression to the next level, and they trust you, they create the bond with you, and that's where the sales close. Hack number 8 is using the alternative close. See, this is very powerful. You don't say कि अगर ये buy नहीं करेंगे तो और कुछ नहीं buy करेंगे. No. Always give them an option A, option B, option C. You see and judge कि इनकी क्या needs है, इनकी क्या budget needs है अभी, इनका time schedule कैसा है, and from there you have that kind of a sense कि यार शायद से maybe that person right now is not ready for a high ticket kind of a product of yours. Not a problem. You give that person options, because instead of losing the sale completely, you can actually bring them in the funnel and sell something which is relevant at this moment, provide the value, and from there you can upsell. So always give an alternate while closing. If you find that there is a deadlock and there is nothing going to happen, that also creates lot of sales which are leftovers. Powerful technique. Use this. Use an alternative close. And the 9th and the most powerful hack is trust. Yes, my friends, people don't buy brands, people don't buy products or services, they buy you. They buy you because they like you, they respect you, they trust you. This is from my own experience. I'm not the only person selling programs on online courses or doing webinars or seminars. There are thousands in India. Anybody can read, think and grow rich and coach on that. But why do people connect with me? Because they like me, they buy me, they respect me, they trust me. And that's where you can really start to increase your sales. Share real life stories, be authentic, be genuine, build that connection, show up consistently, go the extra mile. I mean, be the change which you really want to have them in the world, be the role model, practice those principles which you're actually preaching, use your own products and services. That creates the trust. Trust is one factor which can really skyrocket your sales. I've sold millions just by using this one factor of trust. And once that trust goes to the next level, your sales will skyrocket. These 9 powerful hacks are very powerful. Master these 9 hacks, not to trick people into buying, but to help the right people saying a yes to their next breakthrough. Call to action for you today. I've created a sales psychology cheat sheet which you can download. It is there in the description also. There will be a link also over here which you can use it right away. Whatever be your product, whatever be your service, you can use it immediately so that you can really start to skyrocket your sales. Sales is a very powerful function which you are there in. If you are a salesman, I would really want you to use these powerful hacks, add value to your client and services, and that's where you can really earn millions. You can add value to the world. This is where you can really start to skyrocket and become the #1 salesman in your field, in your industry. If you have liked this particular video, if you have liked any of these hacks, then please like this particular video, share this particular video to someone whom you love, subscribe to our channel for more such videos, comment in the comment box कि कौन सा hack आप use करेंगे, and let's take it to the next level. I am Siddharth Shah, your friend, your mentor, to help you, to coach you. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much.